कश्मीर लाइफ ड्रीम बिग सीरीज में आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सीरीज में हम बात करते हैं कई अशखास से, और उसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी रिस्पोंडेंट जिनका नाम है डॉक्टर बिस्मा परवेज, और जो कि एक मटेरियल साइंटिस्ट हैं, एंड जिन्होंने अपना पीएचडी रिसर्च इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया से अक्वायर किया है। और रिसेंटली इन्होंने एक ऐसा इनोवेटिव मटेरियल डेवलप किया है जो कि considered किया जा रहा है as a transformation to the automotive world. So today we will be in conversation with her and we will get to know about her innovative research as well as her experiences throughout her journey. So first of all, thank you Bisma for being with us today and taking part in this series. You're welcome, Maima. It was my pleasure. फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मा, हमें अपने बारे में कुछ बताएं। आप कश्मीर में कहाँ से जी हैं उस बारे में बताइए, और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी। जी मेरा नाम बिस्मा परवेज मीर है और मेरी स्कूलिंग श्रीनगर ब्रिटिश स्कूल से हुई है। एंड मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एंड देन आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर। एंड रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया। और मैं करण नगर से ताल्लुक रखती हूँ। First of all, tell me something about your PhD. Like, what was it all about, and why did you choose to go for PhD abroad and not here? यस दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा काफी इंटरेस्ट था पीएचडी करने में। मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया आफ्टर मास्टर्स बिकॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ आवर मास्टर्स हमें रिसर्च वर्क करना होता है। तो इन दैट रिसर्च वर्क देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस that were unresolved going through my mind. तो मुझे लगा there is something incomplete. And because of some limitations here, I realized कि मैं यहाँ उन सवालों का जवाब नहीं हासिल कर सकती हूँ। And moreover, I wanted to go outside to learn from people. And मैं outer world देखना चाहती थी, mostly in terms of research, क्योंकि मैंने काफी सारा research work पढ़ा था जो कि बाहर से ज्यादातर आया था. So I was really fascinated to see what people are doing so that I can learn from them. And इसलिए मैंने सोचा कि I will do my PhD from abroad. And Malaysia was one of the country that I chose because of academics as well as because of the culture. So that's why I went to abroad. Can you tell us something about your research that you did? Like, what were the major takeaways from your research, the innovative research? Although I have done my bachelor's and master's in mechanical engineering, but मेरे masters में जो मैंने project लिया था that was based on materials, composites. And I realized कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ, whatever we are doing, materials is having great scope in terms of we can say improvement. क्योंकि अगर आप अपने आसपास की कोई भी चीज देखें तो हर एक चीज मटेरियल्स की बनी है। और अगर फॉर एग्जांपल हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर हम एफिशिएंसी मशीन ऑटोमोटिव्स या जो भी है उनकी इंप्रूव करने का सबसे बड़ा फैक्टर है मटेरियल। सो आई गॉट इंटरेस्टेड इन मटेरियल्स। That's why I started doing PhD in materials and manufacturing in Malaysia. And materials में मुझे लगा there is a large scope of study और काफी सारी curiosities है जिनका सवाल का जवाब नहीं मिला है। And because of these curiosities, I just chose the materials engineering and I pursued my degree in this course. And I have seen कि आप इसमें जितना भी आप materials को understand करें आपको लगता है कि आपकी understanding के हिसाब से बहुत कम है। और अगर आप थोड़ा सा भी इसमें improvement करें then you can improve the properties characteristics of that particular thing immensely. So मुझे लगा this is the basic study जो हमें basically study करना चाहिए, that is materials. And मुझे लगा कि I should work on it in order to improve the performance of whatever I am studying. जैसे for example मेरा basic motive था कि मैं performance of automotives improve करूँ. And nowadays researchers are working more on improving the weight, like reducing the weight of the automotives. क्योंकि अगर आपका automotives का weight कम होगा तो fuel consumption कम होता है and finally there will be less emission of the harmful gases. Moreover आपका जो है fuel consumption भी कम होता है। तो काफी सारे materials आजकल यूज किए जाते हैं automotives में या lightweight structures में। तो ये materials basically lightweight होते हैं और इनका strength भी अच्छा होता है। There are many materials like polymers, काफी सारे materials यूज किए गए हैं, but I worked on the metal
aluminium that is already used by manufacturers in the development of the cars or other parts. But in my study, I try to develop a porous material, एक porous material जो aluminium porous होगा, but उसकी strength वैसी होगी जो उस solid aluminium की होती है. ऐसे हमारा weight भी कम हो जाता है उस part का और वो हमें वो strength भी देता है that is required. However, there were many challenges in this study. Alhamdulillah, some I have overcome, but I still think there is a lot need to study and a lot of improvement. There's a scope for a lot of improvement. Can you tell me why did you opted for research only and not going for any random job? Like, why did you only go for research, not any job in particular in Malaysia? Actually, I started my BTech only because I was keenly interested in gaining knowledge regarding things I have heard. I used to watch मैं काफी ज्यादा डिस्कवरी चैनल देखा करती थी वहाँ वो कुछ प्रोग्राम्स आते थे हाउ दिस इज मेड सो मैं वो देखा करती थी एंड उसमें काफी कुछ मैकेनिकल बेस्ड था तो आई वाज फैसिनेटेड मेरे काफी दिमाग में सवाल आते थे ये लोग कैसे करते हैं ये कैसे करते हैं मैं भी करना चाहती हूँ बट एट दैट टाइम व्हेन आई ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोग कहते थे यू आर अ गर्ल तुम नहीं कर सकती हो वो ये बट मुझे नॉलेज गेन करना था मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी काफी सारे जो मेरे दिमाग में सवाल थे या काफी सारे मुझे जो चैलेंजेस लग रहे थे मुझे उनको ओवरकम करना था तो आई चोज दिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज माय फील्ड ऑफ स्टडी एंड देन इसे पढ़ने में आई गॉट सो मच इन्वॉल्व इन इट दैट आई thought to continue my studies to masters and then masters changed my whole idea of what I was doing. I realized that in this journey of knowledge, there is a lot I have to learn. There's a lot that I have to, go through. So, मुझे लगा कि नहीं, this can't be the end of my knowledge, journey of knowledge. So, that was one of the reasons जिसकी वजह से मैंने सोचा कि I will pursue PhD and I will, inshallah, want to work more on knowing about things around me or whatever specific thing I will be working on. So, are you looking for a job in the future, or just first of all, you will be just doing research for some time only? Actually, I'm mostly interested in research. I wanted to go for postdoc, and because as I told you that I still have many questions, and there are a lot of things that I think I haven't done yet. That's why I will prefer to go for the research work, and I think job preference is something. If I will get job in the research only, it will be better. What motivates you to do a good research, in abroad, rather than doing the research in Kashmir? Do you think here in Kashmir we lag behind in research, or are there any shortcomings for the researchers? Somehow, actually, if we talk about Kashmiris, तो I have seen Kashmiris have lot of potential. और ये मैंने यहाँ पर बैठ के realize नहीं किया. When I went to Malaysia, I have seen there are many Kashmiris who have done great in every field. And I know Kashmiris are hardworking, but somehow उनको opportunities नहीं मिलती है. There are only few engineering colleges here, first of all, and research अगर हम बोले जहाँ पर research equipments होती है वो भी बहुत कम है. अगर बात करें we have only NIT Srinagar or we have some University of Kashmir, maybe they also have equipments for experimentation and all. बट ओवरऑल जो हमारे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए इक्विपमेंट्स लगते हैं या जो भी मटेरियल होना चाहिए जो भी सोर्सेज होने चाहिए आई थिंक समहाउ वी लैक देम देयर आर मेनी रिसर्चर्स जो कि दर बदर भटक रहे होते हैं लाइक देयर रिसर्च आर गोइंग ऑन फॉर 5 to 6 years only because of the lack of the equipments they require and also there are many people who want to go for the research but they don't have opportunities. मुझे लगता है ये सब चीजें जो है एक दिमाग को मतलब जो दिमाग बहुत कुछ कर सकता है उसे रोकता है. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर. Another factor I feel is that our work culture, our I can say supervision culture in our universities. I have seen that there are many supervisors who just don't try to motivate the student to learn. Rather, they divert them towards something that's not more important. And बाकी यहाँ पर encouragement उतनी नहीं मिलती स्टूडेंट को जितनी मिलनी चाहिए. As PhD is not just a degree, it's a journey. ये बहुत बड़ी जर्नी होती है. इसमें अगर आपको encouragement ना मिले तो आप बहुत ही demotivated feel करते हैं and you will stop
सडनली यू डोंट वांट टू कंटिन्यू। तो मुझे लगता है इसमें मोटिवेशन काफी होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है, either from institution or I can say from their supervisors. I think that's also one thing that I have noticed here. And finally, I can say that यही resources की कमी जो यहाँ पर है, opportunities की कमी जो है, इसकी वजह से जो है बहुत सारे researchers हैं, they just don't want to continue. And moreover, if some people go for the research, obviously, जब आप PhD के time पे होते हो, तो you need some stipends. So there are many universities over here where people are doing PhDs and they are not getting anything. So this is one of the discouraging factor in Kashmir why many people are not going for the PhD. So I think ये है जो आपके रिसर्च के दिमाग को रोकती है। एंड मुझे लगा कि ये कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे कश्मीर में जो हमें जिस पर हमें काम करना चाहिए। Then we can motivate people to do more research and a good research. Do you think having this exposure works out for people? And were there any influences or motivation that you were exposed to during your PhD there? Yes, Alhamdulillah. Yes, that's true. I attended a lot of conferences and there were many exhibitions, many competitions, जहाँ people used to exhibit their work, PhD work. I can't say that वो PhD work बहुत ही high level का था, no one can understand. But the way they used to present was showed their confidence that they are working, they have confidence on their work, and their motive is to improve something. एंड इसकी वजह से इनकरेज होता था वहां हर एक बंदा कि नहीं, इफ दे आर डूइंग दिस थिंग देन आई एम आल्सो डूइंग समथिंग ग्रेट। सो इससे आपको इनकरेजमेंट मिलती है। और दूसरा मैंने ये देखा कि आप जब देखते हैं कि काफी सारे लोग हैं दे आर डूइंग ग्रेट, लाइक आपके कंपैरिजन में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, देन उससे भी आप इंस्पायर हो जाते हो। मोर वो मैंने खुद भी काफी सारे कोलैबोरेटिव वर्क्स किए एंड देयर आर पीपल दे आर ओपन फॉर कोलैबोरेशन एंड दिस कोलैबोरेशन इज like honest collaboration, not like hum aapko like you have to write my name on the paper and I do nothing because I am the head of something. You have to know every person works collectively, honestly, and this collaboration works a lot in abroad. So ये भी एक मैंने देखा कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप इथिक्स को फॉलो करते हैं तब आप बहुत ही ज्यादा काम कोलैबोरेशन में कर सकते हैं, और कोलैबोरेटिव वर्क का हमेशा जो रिजल्ट होता है दैट्स ऑलवेज द बेस्ट। सो वो चीज भी मुझे काफी अच्छी लगी। मोरओवर मैंने काफी सारे लोगों को देखा कि वो कैसे काम करते हैं, हाउ दे वर्क। लाइक if you are into research, it doesn't mean you have to complete this degree. It means that you have to do something that is significant. It means that you have to get something out of your experiments जो किसी के लिए इस्तेमाल मतलब जो यूजफुल होगा आगे जाके। तो you have to work for that. At times आपको लैब में बैठना पड़ेगा, you don't have to you can't go back to your room, you can't go back to sleep. You have to stay alert in your lab because your experimentation is working on. आप नहीं चाहते इसमें कोई भी एरर आ जाए। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे वहां जाकर पता चला कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप ना कि बहुत ज्यादा सीखते हैं about academics, but you also learn a lot about life. And that's something that makes you a better person, I think. Bisma, can you tell us something about your research? What is innovative about it? Can you elaborate? Actually, as I told you, I am from the mechanical background. So I have somehow a good know-how of the automotives, the system, automotive system, engines, and all that, whatever we are, automotive parts are there. So, and then going to the material side, I was ultimately interested in improving what I have studied. So that's why I chose this material engineering. And in material engineering, I studied polymers, I studied various materials, polymers, metals, composites. And then I realized that no doubt nowadays people are using polymers because of their lightweight, but there are many limitations. That's why we prefer metals. But अगर आप देखें कि मेटल्स में प्रॉब्लम यही होती है कि उनका वेट बहुत ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली आयरन मेटल यूज किया जाता था काफी ज्यादा बिकॉज उसका वेट बहुत था, तो देन इट वाज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। तो आपने सुना होगा कि काफी सारे जो कार के कंपोनेंट्स है वो एल्यूमिनियम से बनते हैं। नाउअडेज अगर हम देखें तो उनको रिप्लेस किया गया है पॉलीमर से या लाइट वेट कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड मटेरियल से। बट उनकी लिमिटेशन ये है कि उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती है। और अगर हमारी कार की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं हो, कार स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी,
तो एक्सीडेंट्स के दौरान डैमेज हो सकता है टू द कार कंपोनेंट एज वेल एज टू द पैसेंजर्स। इट मीन्स दैट कार की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सेफ्टी भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाई इम्प्रूविंग द मटीरियल दैट वी आर यूजिंग फॉर द स्ट्रक्चर। सो मेरा यही मोटिव था कि स्ट्रक्चर के लिए हम कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढे जो कि हम स्ट्रक्चर पैनल में एज अ सैंडविच कोर यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्यूमिनियम हम हॉलो यूज करेंगे तो उसके अंदर कोई ऐसा कोर स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो कि लाइट वेट होगा और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो आई वॉज इन दिस जर्नी, आई वॉज ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कॉम्पोजिट, बट दिस कॉम्पोजिट वॉज पोरस। इसमें काफी सारे चैलेंज मैंने फेस किए हैं क्योंकि मेरा पोरस कॉम्पोजिट बन नहीं रहा था। एज आई वाज यूजिंग द सिंपल टेक्नोलॉजी दैट that I prefer simple technology so that it can be, low cost, and it can be easily available. And moreover, is technology mein, for example, it's a powder metallurgy technology. It allows the material conservation, and nowadays this technology is used mostly. So, but there were many challenges in this. So, in challenges को clear करना, it's not a one day job. इसमें आपको बहुत टाइम लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं, काफी सारे। बट ये फेलियर्स आपको सिखाते हैं कि व्हाट रॉन्ग यू आर डूइंग। एंड ऑल्सो आई एम थैंकफुल टू ऑल माई ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ माई यूनिवर्सिटी, बिकॉज जो भी मेरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, आई वेंट टू देम। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव सीन इन abroad, that I went to them, and even though they were not my supervisors, but they supervised me, they guided me correctly. वो कहते थे कि शायद आपने यहाँ पर गलत किया, you should correct this thing. And there are a lot of things जो मैंने उनसे सीखा. And then there was a hard time, or we can say that was a good time also, when I was in labs. Day and night, I was working to get this done. And finally, we developed a material that is porous, that is lightweight, and it has good strength as compared to the solid material that we are using. Although this work is just in हमारा जो research phase में ही है, there is a lot that needs to be done in this. But Alhamdulillah, what we thought we want to do, we did that somehow. So, what are your personal interests apart from the research? And are you thinking to create some other material furthermore? As I told you, that there is a large scope in materials. In that, if we improve material, then we can improve the property of the whatever machinery we are using, or the equipments that we are using, tools, or the structures, building structures. So materials का मुझे लगता है there is a lot जो मैं इसमें कर सकती हूँ, and there is a lot that I need to learn, I need to study. Nowadays, people are studying materials at micro levels, nano levels, and that is the fascinating part. वो एक नया ही science बन रहा है जो इवॉल्व हो रहा है, जहाँ पर आप मटेरियल्स को माइक्रो और नैनो लेवल पे स्टडी कर रहे हो। एंड दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स उसको काफी टाइम लगता है क्योंकि काफी सारे लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम लगता है। तो आई थिंक yes, I want to study materials more, I want to know more about them, and inshallah I want to, yes, I want to develop materials that will be inshallah beneficial to mankind. Concluding the session, is there any advice or final thoughts to people out there that you want to put forward? Yes, this is my message to all the research scholars, even if they are in Kashmir or in India or all over the world, that even if they are failing, this is also a type of success, because if you fail something, it means you are doing something. और अगर आप फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेट कर रहे हैं इस चीज पर कि हर एक चीज में मुझे, हर एक एक्सपेरिमेंट में मुझे सक्सेस मिलना चाहिए, फेलियर नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगी आप कुछ नहीं सीखोगे। आप अपने फेलियर से ही सीखते हो, और डिस्करेज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो जर्नी है ना, दिस इज ग्रेट। रिजल्ट इज नॉट, डेस्टिनेशन इज नॉट ग्रेट, द रिजल्ट, द जर्नी इज ग्रेट, बिकॉज इस जर्नी में जो आप सीखने वाले हो, जो आप बनोगे, दैट मैटर्स अ लॉट। एंड डोंट फील डिस्करेज्ड, बिकॉज यू आर डूइंग रिसर्च एंड यू आर डूइंग समथिंग। आपको कोई भी मेजर नहीं कर सकता है दैट समवन इज डूइंग ग्रेटर देन यू, समवन इज डूइंग लेस देन यू। People nowadays are having low confidence regarding their work. Even मैंने देखा कश्मीरीज काफी सारा अच्छा काम कर रहे हैं, but still they don't have confidence in their work, they don't have confidence in their capabilities. वो हमेशा कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। No, if you want to pursue something, just go for it, work hard, and inshallah you will get it. Don't lose hope.
And secondly, this is my request to all the supervisors, especially in Kashmir, that आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें काम करने के लिए, उनको वही काम करने दें जो वो काम करने के लिए बने हैं, और उनको encourage करें ताकि वो और and they will benefit you. For example, if I talk about my supervisor, Alhamdulillah, she always, like, she supported me so much. I think whatever great I have done, whatever good I have done, is all because of her support. So supervisor is like a family for a PhD scholar. So this is my, this is my request to all the professors who are acting as a supervisor, and best of luck to all the research scholars. And I am sure, inshallah, they will do great in this research work. And finally, I want to thank Kashmir Life for giving me opportunity to present my ideas or whatever I was thinking. Maybe there are some people who require to hear this. So through you, I could do it, and I'm so thankful to you. Thank you, Manda. Thank you so much for taking out time for us and being part of this conversation. We wish you all the best ahead and thank you so much again. Thank you.